Hello everyone. In a previous class, we discussed about what is amplifier and its parameter and how to calculate the parameter or gain of the amplifier. In this lecture, we will study about transistor at low frequency, transistor modeling. After this, we will move on transistor hybrid model or H parameter of the transistor. Next is an analysis of transistor amplifier using H parameter. हाइब्रिड पैरामीटर को ही हम H पैरामीटर बोलते हैं in short. The next topic is H parameter for all three configurations like common base, common emitter and common collector configurations of the transistor. तीनों के लिए हम H पैरामीटर देखेंगे कि क्या क्या होते हैं तीनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए H पैरामीटर. Output characteristics curve and finally the reference of this presentation. So in this lecture we cover all these topics one by one. So let's start with topic 1, transistor at low frequency. इसको हम frequency response of the transistor भी बोलते हैं. इसमें हम low frequency as well as the high frequency response transistor का देखेंगे. Transistor at low frequency, इसको हम frequency response of the transistor भी बोलते हैं. Actually हम transistor का frequency response दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं, in a low frequency region और in a high frequency region. So the transistor can be employed as an amplifying device, that is the output AC power is greater than the input AC power. पिछले वाली क्लास में हमने देखा था एम्पलीफायर सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जो कि इनपुट पावर लेवल को हमें बूस्ट करके आउटपुट देते हैं, उसको हम एम्पलीफायर सर्किट बोलते हैं. इसमें हम ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, JFET का यूज करके एम्पलीफायर सर्किट बना सकते हैं. The factor that permits an AC power output greater than the input AC power is the applied DC power. The amplifier is initially biased for required DC voltage and currents. Then the AC to be amplified is given as input to the amplifier. If the applied AC exceed the limit set by DC level, clipping of the peak region will result in the output. Thus, proper amplification design required that the DC and AC component be sensitive to each other. Requirement and limitation. The superposition theorem is applicable for the analysis and design of the DC and AC component of a BJT network. BJT means bipolar junction transistor, permitting the separation of the analysis of the DC and AC response of the system. Transistor modeling. The primary function of a model is to predict the behavior of a device in a particular operating region. ट्रांजिस्टर में हमने तीन रीजन पढ़े हुए हैं, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड एक्टिव रीजन. तो तीनों रीजन में ट्रांजिस्टर का बिहेवियर जानने के लिए हम मॉडल्स बनाते हैं. The behavior of the BJT in the sinusoidal AC domain is quite different from its DC domain.
At DC, the BJT usually work at in either saturation or cutoff region. In the AC domain, the transistor works in the linear region and effect of capacitance between terminals. Input impedance, output conductance, etc. all have to be accounted for. BJT transistor modeling. A model is an equivalent circuit that represents the AC characteristics of the transistor. A model uses circuit elements that approximate the behavior of the transistor. There are two models commonly used in a small signal AC analysis of a transistor. That is, resistance equivalent model, in short RE model, and hybrid equivalent model, means H equivalent model. अभी हम स्टडी करेंगे हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल की. इसी से हम H पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे. H पैरामीटर हाइब्रिड को ही शॉर्ट में हम H बोलते हैं. The models are equivalent circuit or the combination of the circuit elements that allow method of circuits analysis to predict performance. So the next topic is transistor hybrid model. To demonstrate the hybrid transistor model, an AC equivalent circuit must be produced. The left-hand diagram below in the single common emitter stage for analysis. So this is the diagram. The left-hand diagram is called a common emitter configuration of the transistor, and the right side diagram is the equivalent circuit of that diagram. तो पहले वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं इसमें तीन कैपेसिटर कनेक्टेड है C1, C2 एंड C3. कॉमन एमीटर का डायग्राम है या कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें एमीटर को कॉमन किया हुआ है और राइट हैंड साइड इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया हुआ है. At AC, the reactance of coupling capacitors C1 and C2 is so low that they are virtual short circuits, as does the bypass capacitor C3. The power supply, which will have filter capacitor, is also a short circuit as far as AC signals are concerned. The equivalent circuit is so above. On the right hand diagram, the input signal generator is so as Vs and the generator's source impedance as Rs. As RB1 and RB2 are now in parallel, the input impedance will be RB1 parallel RB2. The collector resistor RC also appears from the collector to emitter. As emitter is bypassed, you can see the diagram. In this diagram, RB1 parallel to RB2 and emitter is bypassed. The blue rectangle now represent the small signal AC equivalent circuit and can now start work on the hybrid equivalent circuit. The hybrid model has 4 H parameters. The H stand for hybrid because the parameters are a mix of impedance. Hybrid हम क्यों बोलते हैं? Hybrid मतलब
जिसमें पैरामीटर जो है वो मिक्स होते हैं उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार आजकल इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल अगर दोनों पे चलती है तो उसको हम हाइब्रिड कार बोलेंगे, क्योंकि उसको हम इलेक्ट्रिकल एज वेल एज पेट्रोल या डीजल दोनों पे ऑपरेट कर सकते हैं। सो सिस्टम इज कॉल्ड द हाइब्रिड। सो मिक्स ऑफ इम्पीडेंस, एडमिटेंस एंड dimensionless units. In common emitter, the parameters are HIE. The first parameter is called input impedance in ohm. Second is HRE, reverse voltage ratio. This is dimensionless. Third is HFE, forward current transfer ratio. This is also dimensionless. And fourth is HOE, output admittance in Siemens. Note that lowercase suffix indicate small signal value and the last suffix indicate the model. So HIE is the input impedance in common emitter. HFB would be forward current transfer ratio in common base mode, etc. The hybrid model for BJT in common emitter modes is so below. This is the hybrid model for BJT in common emitter mode. तो इसमें चारों पैरामीटर दिखाए हुए हैं, HIE, HRE, HFE and HOE. इनपुट को I से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आउटपुट को O से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और E का मतलब है कॉमन एमीटर मोड में है, इसलिए हमने पैरामीटर को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। The hybrid model is suitable for small signals at mid-band and describes the action of the transistor. Two equations can be derived from the diagram. One for input voltage VBE and one for the output IC. So the input voltage VBE is equal to HIE into IB plus HRE into VCE. The output IC is equal to HFE into IB plus HOE into VCE. If IB is held constant, means IB is equal to 0, then HRE and HOE can be solved. So HRE is equal to VBE oblique or divided by VCE, where IB is equal to 0, and HOE is equal to IC by VCE, where IB is equal to 0. Also, if VCE is held constant, so means VCE is equal to 0, then HIE and HFE can be solved. मतलब हम ये चारों पैरामीटर निकालेंगे। दो पैरामीटर कब निकलेंगे? दो पैरामीटर जब IB is equal to 0 कर देंगे तो दो H पैरामीटर फाइंड आउट कर लेंगे, और when VCE is equal to 0, so we can find out the another two parameter or another two H parameter. HIE is equal to VBE divided by IB, where VCE is equal to 0. HFE is equal to IC divided by IB, where VCE is equal to 0. These are the four basic parameters for a BJT and common emitter. Typical value are HRE is equal to 1 into 10 raised to the power minus 4. HOE typical value
20 US. HIE typical value of HIE is 1K to 20K, and HFE can be 50 to 750. The H parameters can often be found on the transistor data sheet. The next topic is analysis of transistor amplifier using H parameter. So this is the diagram for two-port network. If we analyze the transistor as an amplifier using H parameter, so we consider a network or two-port network. What's the meaning of two-port network? Two-port network ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें दो पोर्ट होते हैं. लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्ट को हम इनपुट पोर्ट, या जहां हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं वो हमारा इनपुट पोर्ट कहलाता है, और जहां हम लोड को कनेक्ट करते हैं वो हमारा आउटपुट पोर्ट कहलाता है. तो इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में, जहां VS लगा हुआ है वो मेरा इनपुट पोर्ट है, और जहां पे RL लगा हुआ है वो मेरा आउटपुट पोर्ट है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल टू पोर्ट नेटवर्क. Substituting the complete hybrid equivalent circuit into the two-port system. अब जो हमने जो पैरामीटर निकाले हैं वो चारों के चारों पैरामीटर को हम इस टू पोर्ट नेटवर्क में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो उसके बाद जो हमारा डायग्राम है कुछ इस तरीके से दिखेगा. इसमें हमने चारों पैरामीटर HI, HR, HF और H0 सब्स्टिट्यूट करके डायग्राम को बनाया है. For analysis of transistor amplifier, we have to determine the following terms. Number 1, current gain. ये हमने ऑलरेडी पिछले वाली क्लास में पढ़ा हुआ है कि करंट गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है. सो करंट गेन रिप्रेजेंट करेंगे हम AI से, इज इक्वल टू आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट, मीन्स I0 डिवाइडेड बाय II. वोल्टेज गेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं AV से, इज इक्वल टू V0 बाय VI, मीन्स आउटपुट वोल्टेज, रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज. इससे हम वोल्टेज गेन निकालेंगे. नेक्स्ट, इनपुट इम्पिडेंस. इसको हमने प्रीवियस वाली क्लास में RI से रिप्रेजेंट किया था. चूंकि वहां पे हमने रेजिस्टेंस लिया था इसलिए RI लिखा था. यहाँ पे हम इम्पिडेंस ले रहे हैं तो इम्पिडेंस को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं. सो ZI इज इक्वल टू, सीधा ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू IR. सो R इज इक्वल टू V अपॉन I. उसी फॉर्मूले का यूज करके हमने इनपुट इम्पिडेंस ZI निकाला है. तो ZI इज इक्वल टू V अपॉन I. तो इनपुट इम्पिडेंस कैसे निकालेंगे, इनपुट साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट साइड का करंट. सो द इनपुट इम्पिडेंस इज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट. फॉर्मूले में आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज आउटपुट इम्पिडेंस. सिमिलरली आउटपुट साइज का जो हम इम्पिडेंस निकालेंगे वो Z0 रहेगा. फॉर्मूला हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द आउटपुट इम्पिडेंस Z0. So first we find the current gain. Applying Kirchhoff current law to the output circuit of the hybrid equivalent circuit. अभी हमने जो सर्किट एक बनाया है उसको आप कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे और उसमें हम अप्लाई करेंगे Kirchhoff current law, KCL अप्लाई करेंगे. So the value of I0 is equal to I plus HF into IB is equal to V0 upon 1 upon H0 plus HF. So I0 is equal to V0 H0 plus HF IB. Substituting V0 is equal to minus of I0 into RL given as, so I0 is equal to HF into IB minus of H0 I0 into RL. Rewriting the above equation, so we get I0 in bracket 1 plus H0 into RL bracket close is equal to HF into IB. So that
AI is equal to I naught divided by IB is equal to HF divided by 1 plus H naught into RL. Note that the current gain will reduced to the familiar result of AI is equal to HF if the factor H naught and RL is the sufficient small compared to 1. अब इस फॉर्मूले से हम सीधे देख सकते हैं कि जो हमारा करेंट गेन है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है HF पैरामीटर पे. Next, we can find out the input impedance. For the input circuit, VI is equal to HI into IB plus HR into V naught. Substituting I naught is equal to minus of V naught divided by RL, or AI is equal to I naught by IB. So that the equation above become VI is equal to HI into IB minus of HR into RL into AI into IB. Solving for the ratio BI by IB, so we obtain ZI is equal to VI by IB is equal to HI minus of HR RL into AI. Substitute AI in the equation. So we find the input impedance. Next one is the output impedance. The output impedance of an amplifier is defined to the ratio of the output voltage to the output current with the signal Vs set to 0. For the input circuit with Vs is equal to 0, the value of II is equal to minus of HR into V naught divided by Rs plus Hi. Substituting this relationship into the following equation obtained from the output circuit, I naught is equal to V naught into H naught plus HF into IB, and Z naught is equal to V naught by I naught is equal to 1 upon H naught minus of HF into HR divided by in bracket HI plus RS bracket close. In this case, the output impedance will reduce to the familiar form Z naught is equal to 1 upon H naught for the transistor. When the second factor is the demonstration is sufficiently smaller than the first. So by using this, we can find out the value of output impedance or Z naught. The next is H parameter for all three configurations of the transistor. ट्रांजिस्टर के बेसिकली 3 कन्फिगरेशन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर. तो तीनों के लिए हम देखते हैं H पैरामीटर्स की वैल्यू क्या क्या होगी. हमारे पास 4 H पैरामीटर होते हैं. पहला इनपुट इम्पीडेंस, दूसरा रिवर्स वोल्टेज रेशियो, तीसरा फॉरवर्ड करंट गेन और चौथा आउटपुट एडमिटेंस.
तो कॉमन बेस जो होगा, कॉमन बेस कन्फिगरेशन में इनपुट इम्पिडेंस जो होगा HIB इज इक्वल टू VEB डिवाइड बाय IE। कॉमन एमीटर में रहेगा HIE इज इक्वल टू VBE डिवाइड बाय IB। HIC मीन्स कॉमन कलेक्टर इज इक्वल टू VBC डिवाइडेड बाय IB। ये हो गया हमारा इनपुट इम्पिडेंस विद आउटपुट शॉर्ट सर्किट फॉर ऑल कन्फिगरेशन। अब हम चलते हैं रिवर्स वोल्टेज रेशियो की ओर। तो HRB is called reverse voltage ratio in common base is equal to VEB divided by VCB. In common emitter, HRE is equal to VBE divided by VCE. In common collector, HRC is equal to VBC divided by VEC. Next हम देखते हैं फॉरवर्ड करंट की। So HFB is equal to IC by IE and common base. HFE is equal to IC by IB and common emitter, and HFC is equal to IE divided by IB and common collector. Finally, the output admittance in a common base HOB is equal to IC divided by VCB, HOE is equal to IC divided by VCE and common emitter, and in common collector HOC is equal to IE divided by VCE. So these are the value for H parameter in different configurations of the transistor. Means common base, common emitter and common collector configurations of the transistor. H parameter are not constant and vary with temperature, collector current and collector emitter voltage. For this reason, when designing a circuit, the hybrid parameter should be measured under the same conditions as the actual circuit. Below are the graphs of the variation of H parameter with temperature and collector current. तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर और कलेक्टर करंट कम या ज्यादा होने से ग्राफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। So this is the variation of H parameter with collector current. This is the variation of H parameter with temperature. Next is an output characteristics curve. The graph below shows the output characteristics curve for a transistor in common emitter mode. Common emitter mode बहुत जगह यूज होता है, इसलिए हम common emitter mode का ही output characteristics curve देख रहे हैं. The output curves are quite useful as they show the change in collector current for a range of collector emitter voltage. So वर्टिकल एक्सेस पे हमने लिया है कलेक्टर करंट, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हमने लिया है कलेक्टर एमीटर वोल्टेज. सो IB की डिफरेंट वैल्यू पे मींस बेस करंट की डिफरेंट वैल्यू पे हमें डिफरेंट ग्राफ देखने को मिल रहा है. In addition, because the base current are also known, then two small signal parameters HFE and HOE can be determined straight from the graph. The almost flat portion of the curve show that the transistor behave as a constant current generator. However, in saturation, the steepness of the curve between 0 and 0.4 VCE show a sharp drop in HFE. This is an important fact to consider if using the transistor as a switch.
Typical H parameter values. The H parameter are not constant and vary with both temperature and the collector current. Typical value of 1 milliampere collector currents are. तो ये H पैरामीटर की वैल्यू है अगर हमारा कलेक्टर करंट 1 मिली एम्पियर है। चूंकि H पैरामीटर कांस्टेंट नहीं होता है, वेरी होता है टेम्परेचर और कलेक्टर करंट के रिस्पेक्ट में। सो फॉर द 1 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट द HIE इज इक्वल टू 1000 ohm, HRE is equal to 3 into 10 to the power minus 4, HOE is equal to 3 into 10 raised to the power minus 6, and HFE is equal to 250. Next one is a reference of this presentation. So these are the references. And anybody have any doubt, so please ask. And thank you for watching this video.